अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं, जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। On Monday, leaders from across the opposition spectrum, including Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Priyanka Gandhi Vadra, Sharad Pawar, Akhilesh Yadav and several MPs from Congress, TMC, DMK, NCP Sharad Pawar, Samajwadi Party, Aam Aadmi Party, left parties and others set out from the Parliament House on a protest march to the Election Commission. Their demand was simple: stop the special intensive revision of electoral rolls in Bihar, which they allege is nothing more than an attempt at quote-unquote vote theft. Before stepping out, they stood at Parliament's gates and sang the national anthem, vowing to protect the people's right to vote. The protest, however, never made it to Nirvachan Sadan, the headquarters of the Election Commission. Loudspeakers blared instructions. Only 30 people could proceed. They were told the rest must stop. The MPs refused. Many sat down on the road, raising slogans against the Election Commission. Some took a more defiant route. Sari-clad TMC MP Mahua Moitra, Congress's Sanjana Jatav and Jyothimani and others climbed the barricades to chants of, quote, Loktantra Parvar, end quote. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav also clambered over, fists raised as police tried to hold the line. तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं, जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने। The standoff soon escalated. Buses were lined up and one by one the MPs were whisked away to Parliament Street Police Station. Among them, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. TMC's Mahua Moitra and Mitali Bagh fainted during the chaos and Rahul Gandhi was seen helping them. Kharge called it a fight to save democracy, saying the India bloc would expose what he described as the BJP's conspiracy. Jairam Ramesh went further, calling it murder of democracy right outside the parliament. Our demand, our request from the Election Commission was very clear. We are staging a peaceful march. All opposition MPs are staging a peaceful march from Parliament House to Nirvachan Sadan. At the end of that march, collectively, we wish to present a memorandum on SIR and other issues to the Election Commission. We didn't ask for a group, we didn't ask for a delegation. The language was very clear. Collectively, all opposition MPs would like to hand over a delegation, hand over a memorandum to the Election Commission. Now we are not allowed to even reach Nirvachan Sadan. We are stopped at the PTI building. Right in front of Parliament House, democracy is being assaulted. Right in front of Parliament, democracy is being murdered. So I think this is a too clever and cheeky reply by the Election Commission. Rahul Gandhi, after being released, repeated the charge of vote theft. He pointed to data from the EC's own website and said the problem went beyond Bihar, with similar patterns in many constituencies. अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। The Election Commission has denied allegations of vote chori or vote theft, but
The opposition insists the SIR process in Bihar is designed to disenfranchise voters ahead of this year's assembly elections.